good morning to all the students of class 3rd. Dear student, today we will study the 8th chapter of social science named as our occupations from the book Our Land, Our World. So, dear student, as the chapter name itself is describing the learning objectives of the chapter. So, dear student, we will learn about different occupations in this chapter. Dear student, let's begin with the 8th chapter named as our occupation. Dear student, in the beginning of the chapter, you should know what is the occupation. Occupation क्या होता है, which is very important part of this chapter. So, dear student, as you can see in my screen, every person requires money for his basics and other necessity. सभी लोगों को अपनी बेसिक चीजें लेने के लिए और अपनी जरूरत के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पैसों की जरूरत होती है. He does some kind of job to earn money. तो उस मनी को अर्न करने के लिए वो कुछ तरीके की जॉब्स करता है. And job that helps to earn money is called an occupation. And that job is called occupation. So, what is occupation? The answer is every person requires money for his basic and other necessity. He does some kind of job to earn money, and that helps to earn money is called occupation. So, dear student, there are different kinds of occupations in the world. Let's discuss some of them. The first one is farming. What is farming? Dear student, people of our country do a variety of jobs. Farming is the main occupation of very large number of people. What is the role of farmers? The farmer grows food grains, pulses, vegetables and fruits. Cotton, jute, mustard, groundnuts, sugarcane, tea and many other things are also produced by the farmer. So, what is produced by the farmers? The farmer grows food grains, pulses, vegetables, fruit, cotton, jute, mustard, groundnut, sugarcane and tea. So, this is all about farming, and this is the pictorial part of product of farming. The next one is occupations depend on farming. ऐसे occupation जो farming पे, कृषि पे depend है. Let's discuss these ones. So, dear student, some other occupations depend on the farming. Dear student, handlooms and cotton mills make the cloths from cotton. So, this is very important and I am marking it. Handlooms and cotton mills make cloth from cotton. Handlooms and cotton mills. कॉटन की जो मिल्स होती है, कपड़ा कहाँ से बनाती है? कॉटन से बनाती है. और कॉटन कहाँ से मिलता है? जब किसान कॉटन की खेती करता है तो वो कॉटन को पैदा करता है. So, bags and ropes are made from jute. Again, बैग और रोप्स कैसे बनाई जाती हैं? जूट से बनाई जाती है. और बच्चों, जूट की क्या होती है? अगेन खेती होती है. Cooking oil is extracted from mustard and groundnuts. Cooking oil कैसे बनता है? मस्टर्ड और
ग्राउंड नट्स को एक्सट्रैक्ट करके कुकिंग ऑयल बनाया जाता है। तो किस चीज की खेती होती है? मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट्स की खेती होती है। शुगर एंड जैगरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन। कैसे बनाया जाता है गुड़ और चीनी? शुगर केन से बनाया जाता है, गन्ने से बनाया जाता है। और गन्ने की क्या की जाती है? खेती की जाती है। Tea leaves are processed, dry and packed in the cartons. कैसे बनाई जाती है चाय? चाय की पत्तियां उसकी पत्तियों से बनाई जाती हैं जिसकी खेती होती है। So this is the process of weaving cotton cloth. This is the weaving jute bags, and this is the process of extracting mustard oil. You can see in this. So I am removing it. Okay. The next one is, as you can see in my screen, this is the picture how they are making jaggery from the sugarcane juice. Some people breed cattle. Cattle are fed on the products of farming. क्या किया जाता है? कैटल को ब्रीड, कैटल्स की नस्लें बनाई जाती हैं। कैटल्स आर फेड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ फार्मिंग। ये स्टूडेंट, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गोट्स। सो हम लोग क्या करते हैं? गाय पालते हैं, बफेलोज पालते हैं और बकरियां पालते हैं जिससे हमें दूध मिलता है। जिससे दूध मिलता है तो हम क्या करते हैं? उससे दूध बेचते हैं, उसको एक प्रोफेशन लाते हैं। और देखिए, दिस इज द पिक्टोरियल पार्ट ऑफ द थिंग। देखो कैसे आदमी काऊ से मिल्क निकाल रहा है, भेड़ की स्किन छील के ऊन बनाया जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज, bullocks are used for plowing the fields. Sheep give us wool. कैसे, कौन आपको wool देता है? भेड़ आपको ऊन देती है। कैसे? भेड़ को छील के उससे ऊन निकाला जाता है। This is pictorial part of this thing. So, dear student, rearing animals for milk or dairy farming is an important occupation. Poultry farming involves rearing hens, ducks and geese for their meat and eggs. किसका यूज होता है पोल्ट्री फार्मिंग में? hens, ducks and geese का, जिसका मीट और अंडा आप बेचते हैं और उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं। So our country has thick forest in some part. Some people collect gum, rubber and medicines, herbs from the forest. Many people cut wood from the forest. Hardwood is used for making furniture. So this is very important question. What is the use of hardwood? The answer is hardwood is used for making furniture. What is the use of light wood? The light wood is used for wooden cartons for packing fruits and making matchboxes and matches. Soft wood is used in paper making. Why we use soft wood? Soft wood is used for paper making. Wasting paper means cutting down more and more trees. पेपर को वेस्ट करना क्या होता है? पेपर को वेस्ट करना
पेड़ को वेस्ट करने के जैसा होता है। जब हम पेड़ काटते हैं हमें पेड़ से पेपर मिलते हैं, इसलिए हमें पेपरों को क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज fishing and mining. What is fishing and what is mining? Dear student, in the coastal areas, fishing is the occupation of many people. In some parts of our country, minerals like coal and iron are found in these areas. Dear student, mining is again the main occupation of there. We get metals after refining minerals. Many types of machines are made from metals. So, what is the use of metals? We get machines from the metals. We get machines from the metals. So, fishing and mining again important occupations of country. As you can see in the pictures, this is the picture of miner, this is the picture of engineer, and this is the picture of blacksmith. So, dear student, let's discuss the other occupation. Many occupations are in form of serving the country or the society. बहुत सारे occupations ऐसे होते हैं जो हमारे देश के काम आते हैं, जो प्रोफेशंस हैं, आइए उन्हें डिस्कस करें. दिस इज द पिक्टोरियल पार्ट ऑफ द प्रोफेशन. दिस इज पायलट जो आपका एरोप्लेन उड़ाते हैं. दिस इज द सेलर जो शिप चलाते हैं, जहाज चलाते हैं. दिस इज द डॉक्टर जो आपका हेल्थ चेकअप करते हैं. दिस इज द सोल्जर जो देश की रक्षा करते हैं. दिस इज द टेलर जो आपके कपड़े सिलते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ टीचर जो क्या करती हैं, आपको पढ़ाती हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्टिस्ट जो ड्राइंग्स बनाती हैं, आर्ट बनाती है, उसे आर्टिस्ट कहते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ कारपेंटर जो आपके घर में वुड का सामान बनाते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लोन. ये किसकी पिक्चर है, जोकर की पिक्चर है. दिस इज द पिक्चर ऑफ पॉटर जो कैसे क्या बनाते हैं, मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ शॉपकीपर जहां से आप सामान लेते हैं, ग्रोसरी शॉप को से उसे क्या बोलते हैं, शॉपकीपर बोलते हैं, जो आपको आपकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग सामान देते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ डेंटिस्ट. क्या काम है बच्चों डेंटिस्ट का? डेंटिस्ट आपके दांतों की रक्षा करते हैं, दांतों को देखते हैं, उनमें कैविटी होती है, उन्हें हटाते हैं. So this is all about the chapter 8, our occupation. Dear student, let's have a quick revision of this chapter. Dear student, very first we have learned what is the occupation. So dear student, we have learned every person requires money for his basic and other necessities. He does some kind of job to earn money. Any job that helps to earn money is called occupation. So let's discuss different type of occupation. The first one is farming. Dear student, people of our country do a variety of job. Farming is the main occupation of a very large number of people. What is the role of farmers? The farmer grows food grains, pulses, as I am again highlighting it. The farmer grows food grains, pulses, vegetable and fruits. Cotton, jute, mustard, groundnuts, sugarcane and tea are produced by farmer. So, dear student, let's discuss occupations depend on the farmer. जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट ऑक्यूपेशंस है, हम उन्हें डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट, हैंडलूम एंड कॉटन मिल्स मेक द क्लॉथ फ्रॉम cotton.
और कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन की खेती की जाती है। बैग्स एंड रोप्स आर मेड फ्रॉम जूट। आगे जूट की खेती की जाती है। कुकिंग ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट्स। कैसे बनता है कुकिंग ऑयल? मस्टर्ड और ग्राउंडनट्स को एक्सट्रैक्ट करके कुकिंग ऑयल बनता है। शुगर एंड जेगरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन एंड टी लीव्स are processed, dried and packed in carton. So this is the pictorial part of these things. How we get oil after extracting mustard oil, how we get jute bag and how we get cotton cloths. And this is the pictorial part of how we get jaggery from sugarcane juice. Some people breed cattle. कुछ लोग cattle की नस्लों को बनाते हैं. We get milk from cows, buffaloes and goat. Bullocks are used for plowing the fields. Sheep give us wool. कैसे देती है sheep हमें wool? उसकी बालों से उसको छिला जाता है, काटा जाता है, उसके बाद हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है. Rearing animals for milk or dairy farming is an important occupation.